Hello everyone. In last lecture we have already discussed about the implementation, scope and rates of GST. In this lecture we are going to discuss about the features, benefits and drawbacks of GST. So let's start. Features of GST. Number first is destination based tax. GST is a destination based tax as against the present concept of original based tax. जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मींस जहां पर गुड्स की कंजम्पशन होगी वहीं पर टैक्स लेवी किया जाएगा एंड कलेक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूल टैक्स सिस्टम. इट इज अ ड्यूल जीएसटी with the center and state simultaneously levying it on a common base. ये एक ऐसा टैक्स है जो सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवी करेंगे, दोनों ही कलेक्ट करेंगे. द जीएसटी टू बी लेविड बाय द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी, दैट इज CGST, and that to be levied by the states would be called as state GST, that is SGST, CGST and SGST. Third point is mutually agreed rate. CGST and SGST is levied at rates to be mutually agreed upon by the central and states. जो भी mutually agreed होंगे rates उसके accordingly ही ये tax levy होगा. Next point is taxes replaced. GST replaces the following taxes currently levied and collected by the center. That is central excise duty, duties of excise, additional duties of excise on goods and services, textile and textile products, CVD, that is countervailing duty, SAD, that is special additional duty, service tax and cesses and surcharges. Taxes subsumed. GST में कौन से टैक्सेस कवर किए गए हैं? वो हैं स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, entertainment tax that is not levied by the local bodies, taxes on advertisement, taxes on lotteries, betting and gambling, state cesses and surcharges, and so far as they relate to supply of goods and services. Next point is general tax system. जो GST है उसका एक जनरल tax system है that is applied to all goods and services bearing a few specified goods and services. IGST, that is integrated GST, is levied on interstate supply of goods and services. IGST interstate supply of goods and services पर levy होगा. This would be collected by the center so that the credit chain is not disrupted, and accounts would be settled periodically between the center and state to ensure that the SGST used for payment of IGST is transferred to the destination state where the goods and services are eventually consumed. जहाँ पे goods and services consumed की जाएंगी वही state benefit इसका gain करेगी. Import of goods. Import of goods and services is treated as interstate supply and therefore IGST is applicable on this imports of goods. IT based administration. It is completely information technology based administration. Concept of cloud computing, GST Suvidha Kendra and GSTN are unique. Tax revenue appropriation between the center and states. टैक्स एप्रोप्रिएशन रेट्स डिसाइड किए जाएंगे जो 50-50 के रेशियो में होंगे. द सेंट्रल एंड स्टेट शेयर जीएसटी टैक्स रेवेन्यू एट 50-50 रेशियो. दिस मीन्स दैट इफ सर्विस इज टैक्स एट 18%, अगर कोई भी सर्विस 18% पर टैक्स की जाती है देन 9% विल गो टू द सेंटर एंड 9% विल गो टू द कंसर्न स्टेट. Next point is right to tax on territorial waters. Right to impose tax on economic activities that are done on territorial waters. Here both the center and states have decided that they can impose and collect tax on those supplies that falls within 12 nautical miles. Next point is utilization of input tax credit. In this point we have
we are going to discuss about utilization of input tax credit. जब एक सप्लायर गुड्स को परचेज करता है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग वो एक टैक्स पे करता है, एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ सेलिंग वो एक टैक्स पे करता है. जो उसने परचेज के टाइम पर टैक्स पे किया था वो सेल्स के टाइम पर अपना वो टैक्स माइनस कर देता है, तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेट को मिला है वो SGST है, ठीक है, SGST टैक्स के अंदर आएगा. और जो सेंटर को मिला है वो CGST के अंदर आएगा. उस ITC का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम फर्दर पेमेंट करने के लिए, CGST और IGST किस ऑर्डर में हम पे कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में. इन दैट मैनर ITC ऑफ CGST allowed for payment of CGST and IGST in that order. जो ITC हमें CGST से मिलेगा वो हम पहले CGST के पेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे, देन IGST की पेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे. देयर आफ्टर ITC ऑफ SGST allowed for payment of SGST एंड IGST इन दैट ऑर्डर. जो SGST से ITC मिलेगा वो हम पहले उसकी पेमेंट किसके लिए अलाउ करेंगे, SGST के लिए, देन IGST के लिए. देयर आफ्टर ITC जो हमें IGST की पेमेंट के थ्रू मिलेगा वो हम किससे यूटिलाइज करेंगे, सबसे पहले IGST की पेमेंट के लिए, देन CGST की पेमेंट के लिए, देन SGST की पेमेंट के लिए. इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ना ही SGST से हम CGST की पेमेंट कर सकते हैं, ना ही हम CGST के ITC से SGST की पेमेंट कर सकते हैं. मतलब हम जो भी SGST की पेमेंट CGST की पेमेंट से नहीं हो सकती और CGST की पेमेंट ITC की पेमेंट से नहीं क्लियर आउट हो सकती. Okay, next topic is settlement of accounts. Accounts are settled periodically between the center and the state to ensure that the credit of SGST used for payment of IGST is transferred by the originating state to the center to the destination state. Next point is goods and services tax appellate tribunal. Goods and Services Tax Appellate Tribunal is constituted by the central government for hearing appeals against the order passed by the appellate authority or the revisional authorities. Next point is zero rated exports. Under the GST regime, exports are zero rated in entirely, unlike the old tax system where refund of some taxes was not allowed due to fragmented nature of indirect taxes between the center and state. Now only one tax is there, one country one taxism है, इसलिए ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स है कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड सर्टेनिटी. Common procedure for registration of taxpayers, refund of taxes, uniform format of taxes return, common tax base है, common system of classification of goods and services है, along with the timelines for every activity lend gather certainty to taxation system. ये सभी एरियाज कवर होने के कारण हमारी जो टैक्स रिज्म को लेकर सर्टेनिटी इंक्रीज हो चुकी है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ GST. नंबर फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट. GST aims to make India a common market with common tax rate and procedure and remove the economic barriers, thus paving the way for an integrated economy at the national level. GST के आने से एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गई है, कॉमन टैक्स रेट हो गया, प्रोसीजर्स भी कॉमन है और इकोनॉमिक बैरियर्स भी रिमूव हो चुके हैं. सेकंड पॉइंट इज मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग. By subsuming most of the central and state taxes into a single tax and by allowing a set-off of prior state taxes for the transaction across the entire value chain, it would mitigate the ill effects of cascading. Cascading क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स. जब हम एक स्टेट में टैक्स पे कर चुके हैं, वैट पे कर चुके हैं, देन अगर हम उसके इंटर स्टेट सेल करें फिर हमें CST पे करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है. वन कंट्री एंड वन टैक्स सिस्टम है.
Next point is elimination of multiple taxes and double taxation. GST has subsumed majority of existing indirect tax levies both at central and state level into one tax, that is GST, which is leviable uniformly on goods and services. This has made doing business easier and is also tackling the highly disputed issues related to double taxation of a transaction as both goods and services. Next point is boost to Make in India initiatives. GST will give a major boost to Make in India initiative of the Government of India by making goods and services produced in India competitive in national as well as international market. Next point is buoyancy to the government revenue. GST is expected to bring buoyancy to the government revenue. से government revenue increase होगा by widening the tax base and improving the taxpayer compliance. Next point is saving more money. GST implies the elimination of double taxation system. This has reduced the prices of the goods and services and helped the common man for saving more money. Next point is of business. GST brings one country, one tax concept. This has prevented unhealthy competition among states. It is beneficial to do interstate business. Now come to the point easy tax filing and documentation. For a businessman, GST is a boon. No multiple taxes means compliance and documentation is easy. Return filing, tax payment, refund process is easy and hassle free. More employment and increase in GDP. GST has reduced cost of product. It is expected that demand of product will increase. Cost of product reduce हो जाएगा जिससे क्या होगा डिमांड इंक्रीज होगी. इस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई को भी इंक्रीज किया जाएगा. द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर सप्लाई विल बी एड्रेस्ड बाय ओनली इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी. एज डिमांड विल ग्रो नेचुरली प्रोडक्शन विल ग्रो एंड हैंस इट विल इंक्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होगा. रिडक्शन इन tax evasion. GST is a single tax which includes various taxes, making the system efficient with very little chances of corruption and tax evasion. इससे tax evasion भी कम से कम होगी, corruption के chances भी कम से कम होंगे. More competitive products. As GST addresses cascading effect of tax, interstate tax, high logistic cost, it has made manufacturing more competitive. This will bring advantage to the businessman and consumer in long run. So this is all about benefits of GST. Now we are going to discuss about the drawbacks of GST. हर एक चीज़ जिसके बेनिफिट्स होंगे उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे. तो इस टॉपिक में हम जीएसटी के ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे जो ये है. नंबर फर्स्ट इज चेंज इन बिजनेस सॉफ्टवेयर. Most businesses use accounting software or ERPs for filing tax returns which have excise, VAT, service tax already incorporated in them. पहले बिजनेसेस जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, वो एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स के लिए वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थे उनके कंप्यूटराइज सिस्टम में. द ट्रांजिशन टू जीएसटी रिक्वायर्स अ बिजनेस टू चेंज इन देयर ईआरपी. इससे उनको उनका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, इधर बाय अपग्रेडिंग द सॉफ्टवेयर और बाय परचेजिंग द न्यू जीएसटी compliant software. This has led to increased cost of buying new सॉफ्टवेयर, जिससे क्या है न्यू सॉफ्टवेयर को बाय करने की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज ऑन हाउ टू यूज इट, इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. जीएसटी कंप्लायंस. चेंजिंग ओवर टू ए कंप्लीटली न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिनट डिटेल्स विच बिजनेस लैक्स एट दैट टाइम.
Most of them are worried about filing timely returns, but it is important to note that even before business can reach the filing stage, they have to issue GST compliant invoices. For a traditional pen and paper economy like India, this changes to digital record keeping is massive. So this is another drawback of GST compliance. Next point is increase in operating cost. Most small business in India do not employ tax professionals and have traditionally preferred to pay tax and filing return on their own to save cost. मोस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया क्या प्रेफर करते थे कि वो टैक्स प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाते थे, वो खुद से ही अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और टैक्स पेमेंट करते थे. बट now they require professional assistance to become GST compliant, as it is a completely new system. While this benefit the professionals, the small business have to bear the additional cost of hiring experts. So this is another drawback of GST. Next point is online procedure. GST compliance, return filing and payment all have to be made done on online. Many small businesses are not tech savvy and do not have the resources for fully computerized compliance. Even as the rest of the nation gets ready to go digital, business in small cities across India face a huge technology problem in the days ahead. Next point is cloud-based software. Cloud-based software are helpful in GST compliance. Business owners need only upload their invoices and the software will populate the returns forms automatically with the information from the invoices. Any errors in invoices will be clearly identified by the software in real time, thus increases the efficiency and timelines. Next point is higher tax burden for manufacturing SMEs. SMEs are small manufacturing enterprises. In this sector, this is not easy in the GST rhythm. Under the excise laws, only manufacturing business with a turnover exceeding 1.50 crores had to pay excise duty. Whereas under GST, the turnover limit has to be reduced to 40 lakh. जो लिमिट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर एक्साइज ड्यूटी पे करने के टाइम पर 1.50 करोड़ थी, वो अब 40 लाख तक रिड्यूस कर दी गई है, दस इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन फॉर मैनी मैन्युफैक्चरिंग SMEs. हाउएवर ऑप्शन दी गई है SMEs with a turnover up to 150 lakhs can opt for compensation scheme and pay only 1% tax on turnover in lieu of GST and enjoy lesser compliances. उन्हें ऑप्शन भी दी गई है साथ में SMEs को कि वो 1% टैक्स पे कर दे, बट क्या होगा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट फिर नहीं ले सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज नो क्लियरिटी ऑन टैक्स हॉलीडेज. Many manufacturers used to enjoy tax holidays and state benefit schemes. There is no still notification regarding these benefits. This means increased cost for these industries, which will probably be passed on to the end consumers. So these all are the drawbacks of GST. So that's all about the chapter. Your chapter is finished now. Next chapter will be discussed in next lecture. If you have any queries, then please mention in the comment section. Thanks. Have a nice day.